हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू सेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने पेपर 20 बी का पूरा रिवीजन कंप्लीट किया। सो आई थॉट कि आई शुड आल्सो कंप्लीट द एमसीक्यूज व्हिच इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो 97 एमसीक्यूज आर इशूड बाय देम। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं एंड वी विल कंप्लीट द एंटायर पेपर 20 बी फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज क्या होगा ना, इससे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो माय पर्पस इज टू लाइक कि चलो एक सेशन रहेगा जहाँ पे ओवरऑल पेपर 20 बी का डिस्कशन भी हो जाएगा। सो दोज हु आर विलिंग टू ऑप्ट फॉर दिस पेपर दे कैन आल्सो गेट एन ओवरऑल आइडिया। एंड इसी के साथ आप लोगों को एक फंडामेंटल भी समझ में आएगा कि अच्छा दीज आर थिंग्स आर देयर, सो आई शुड ऑप्ट फॉर दिस पेपर और नॉट। तो उसका भी क्लैरिटी मिल जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्ट कर लिया ऑलरेडी, पढ़ाई भी कर लिया, उन लोगों के लिए तो एक रिवीजन के लिए एक अच्छा खासा प्लेलिस्ट भी बन जाएगा इसके साथ। क्योंकि हम लोग इसके बाद ये वाला जो कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यूज जितने भी अपलोडेड किया गया है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एमसीक्यूज पेपर्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत फायदा देगा। सो लेट स्टार्ट विद दिस एमसीक्यू सेशंस जहाँ पे हम लोग वन बाय वन एमसीक्यूज को डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मेरा, अगर आप लोग पेपर 20 सी का प्लेलिस्ट देखेंगे वहां पे भी मैंने ऐसे करके डिस्कस किया था, वैसे ही मैं पेपर 20 बी का भी ऐसे ही डिस्कस करके आप लोगों के साथ पूरा पेपर 20 बी कंप्लीट करना चाहता हूँ, राइट। सो लेट स्टार्ट वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन द रिस्क ऑफ लॉसेस इन वन और ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन अराइजिंग फ्रॉम द मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस इट इज कॉल्ड एज व्हाट। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क। मैं एकदम डायरेक्ट जो सही आंसर है उसको हाईलाइट करते जाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि दीज आर द राइट आंसर्स। और कहीं पे भी अगर मेरा गलती हो तो जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शंस। हो सकता है कि जल्दी जल्दी में मैंने कहीं पे भी गलत बोल दिया होगा। So that is an human error. I am ready to accept that fault my, okay. So that won't be a problem. So if I am doing anything wrong or any questions you might find that okay these are the, this answer should be this or this question answer should be this, like that, so just let me know, okay. Okay, next, the risk that arises from the possibility of non-payment of loans by the borrower is known as what? We all know that ये अगर हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं ना तो भी हम लोग बोल पाएंगे, दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क, राइट। दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट of market risk is what? The major component of the market risk, interest rate risk, equity risk, commodity, all of the above। क्योंकि ये सब कुछ कंपोनेंट है, इंटरेस्ट रेट भी है, इक्विटी भी है, कमोडिटी भी है। नेक्स्ट, when bank's image and public standing is in doubt and leads to the public's loss of confidence in bank, it is called as what? It is called as reputational risk. It is called as reputational risk। Next, legal risk is known as what? Legal risk is known as, इसका आंसर क्या होगा? when there is a financial loss, when there is a financial loss to the bank arising from legal suit filed against the bank or by a bank for applying a law wrongly। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। So once you have complete the entire paper 20 just complete these videos and complete the MCQs as well। तो आप लोगों का एक ओवरऑल क्या हो जाएगा, पेपर 20 का रिवीजन भी हो जाएगा और फटाफट कंप्लीट भी होगा। Bonds are dash. Bonds are very important and very easy also. Bonds are fixed income securities. We all know that. Zero coupon bond market makes what? No coupon payment. No coupon payment. Next, YTM stand for, we all know that YTM stand for yield to maturity. Yield to maturity. Next, normal yield curve is upward sloping. Normal yield curve is upward sloping. Next, swaptions are, yeah, swaptions are options on swaps. Options on swaps. Next, price sensitives are what? Price sensitives are which of the following options are price sensitives? So these should be higher for longer tenor bonds. Higher for longer tenor bonds. So higher for longer tenor bonds. This should be the answer. Next, a safe haven for investor money is what? Equity market, debt market, speculative market, all of the above. What should be the answer? A safe haven for investor money is debt market, right? A fall in interest rate will make prices of government securities go down, go up, remain unchanged, none of these. So this should be go up.
go up. Next, IRF stand for what? IRF stand for what? IRF stand for interest rate future. IRF stand for interest rate future. So IRF stand for interest rate futures. Next, to hedge the interest rate risk on 4 million of treasury bond with 1 lakh future contract you would need to purchase. ये हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि these are the part of SFM as well. SFM में हम लोग अगर फ्यूचर अच्छे से समझेंगे या किए भी है ना तो हम लोग ये बोल पाएंगे. बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? 4 मिलियन. अच्छा, अब अगर इसका ही पता नहीं है तो अब लोगों को मैं बता देता हूँ. 4 मिलियन तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना. 4 मिलियन मतलब 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख. So that should be answer is 40. The answer should be 40. 40 होना चाहिए. तो 40 कहाँ पे है? These are the 40 answer. So this should be the answer 40. I hope बहुत इजी से समझ में आ जा रहा है. नेक्स्ट इज राइज इन इंटरेस्ट रेट इज डैश द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं. राइज इन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी. कन्वर्सली फॉलिंग इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी. तो डिक्रीज और इंक्रीज होगा. डिक्रीज और इंक्रीज. नेक्स्ट, the economic value of a bank can be viewed as the present value of the bank's expected net cash flows, right? Next, proliferations of NPAs result in increasing dash is increasing in what? It is not a maturity mismatch. Sometimes it is a mismatch and none of the above. So it should be maturity mismatch. The answer would be maturity mismatch. The risk arises when the technology system may go malfunction is classified as which kind of risk? It's an operational risk. It's an operational risk. तो बहुत इजी से समझ में आ रहा है. वन बाय वन हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे. नेक्स्ट, द रिस्क which arises from insufficient capital available to the balance that sudden decrease in assets value is classified as what? Is classified as insolvency risk. Is classified as insolvency risk. Which of the following is not a type of a credit risk? जो credit risk नहीं है. Default, credit spread, intrinsic, basis risk. तो basis risk को हम लोग बोलते हैं. Next, risk of a portfolio with overexposure in steel sector will be dash. Will be more than systematic risk. Will be more than systematic risk. The risk arises due to worsening of credit quality is known as what? Is known as what? Is known as credit spread risk. It's known as credit spread risk, right? Next, the model, very important, the model that combine 5 financial ratio using reported accounting information and equity value to produce an object measures of borrower's financial health is Altman Z-score. Altman Z-score. A transaction where financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of assets से generate होता है. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है securitization. इसको बोला जाता है securitization. Next, the objective of liquidity management. The objective of liquidity management is to what? The objective of liquidity management is to both like ensure profitability, ensure liquidity. Banks need liquidity to what? Banks need liquidity to meet deposit withdrawal, fund, loan demands, both of them. So the answer should be both of them. Answer क्या होना चाहिए? Both of them. Next, who formulates Basel guideline? That is BCBS. आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार रीड करेंगे बुक तो आराम से आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, when did India started implementing Basel वन गाइडलाइन? कब स्टार्ट किया था? 1992 में. याद रखना आप लोग, ये थोड़ा याद रखना होगा बिकॉज वंस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर रीडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट एंड उसके बाद अगर आप लोगों ने मेरा भी वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं ये आया है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं? क्या डेफिनेशन है उसका? पीडी का क्या डेफिनेशन है? PD का जो डेफिनेशन है that is it measures the likelihood that the borrower will default over or given time horizon, right? Next,
Which of the following is the correct definition of loss given default LGD? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर होगा क्या ना? It measures the proportion. It measures the proportion of the exposure that will be lost if default occur. If default occur. Next, in line with Basel II guideline, what was the minimum percentage CRAR prescribed by RBI? RBI के minimum percentage क्या होने वाला है? That should be 9%. Next, which of the following are the risk faced by the bank? कौन सा risk face कर रहा है बैंक? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इनकम रिस्क और ए एंड बी? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, लाइक क्रेडिट रिस्क भी एंड मार्केट रिस्क भी. नेक्स्ट, what is the effect of the capital requirement of a bank if it take exposure to riskier assets? अगर ये riskier asset में exposure मिल रहा है इन लोगों को तो क्या होने वाला है? More capital is required. More capital is required. Next, a sovereign credit rating is the credit rating of a dash. A sovereign credit rating is the credit rating of a dash. इसका क्या आंसर होने वाला है? That is a normal government. That is a sovereign entity. That is a sovereign entity. Next, the risk that a government may default on its debt obligation. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग what kind of risk? A risk, the risk that a government on its debt obligation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sovereign risk बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं sovereign risk, right? A floating exchange rate. A floating exchange rate is the rate is like it's allowed to vary accordingly to market factors, right? It allowed to vary accordingly to market forces or factors. Forces, the right word is, yes. Next, in India, settlement risk is largely mitigated by settlement through what? By settlement through क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये ध्यान देना चाहिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL. Dash risk arises if a country suddenly spends or suspends or imposes a moratorium on foreign payment because of balance of payment or other problem. So the right answer would be sovereign risk. The right answer would be sovereign risk. A risk arises if the country suddenly suspends or imposes moratorium on foreign payment because of balance payment or other problem. Next, if a firm has a stock-based insolvency in both book and market value terms and liquidates, तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव. दैट इज the payoff will not be 100% to all investors. The unsecured creditors are likely to get less than full value, and the equity holders typically should receive nothing. तो ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, राइट? ये भी है राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है. सो आंसर बी ऑल ऑफ द above. Next, bankruptcy recognitions are used by management to what? To what? To, इसका आंसर क्या होने वाला है? बैंक्रप्सी to provide time to time or to provide time to turn the business around. That is, provide time to turn the business around. Next, financial distress can be best described by which of the following situations in which the firm is forced to take corrective action. To force to take corrective action, तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर होने वाला है? The firm's operating cash flows are insufficient to pay current obligation, right? Next, which of the following is not a type of risk in the banking sector? Which of the following is not a type of a risk in the banking sector? So that is known as account risk. Operational risk is the risk of dash. Operational risk is the risk of what? Operational risk is the risk of loss due to error, interpretations, or interruptions or damages caused by people, system, or processes, right? When the risk of loss in or off balance sheet positions arising from movement in market prices is called as what? It is called as liquidity risk. It is called as liquidity risk. Payment credited to the wrong account is an example of which risk? Payment credited to the wrong account is an example of which risk? That is known as operational risk. That is known as operational risk. Next, dash risk because the financial system is the one
इंट्रिकेट एंड कनेक्टेड नेटवर्क, इसका क्या आंसर होने वाला है 48 का? दैट इज नोन एज सिस्टेमेटिक रिस्क, दैट इज नोन एज सिस्टेमेटिक रिस्क, राइट? नेक्स्ट, the major component of a market risk is dash, the major component of a market risk is इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, इक्विटी रिस्क भी है, कमोडिटी रिस्क भी है, तो दिस शुड बी द ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश रिस्क इज द पोटेंशियल लॉस due to changes in the value of banks asset or liabilities resulting from exchange rate fluctuations, that is क्वेश्चन नंबर 50। क्या होगा इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, डैश इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, oldest form of off balancing item is known as leasing or hire purchasing or joint venture or none of the above, that is known as leasing। Next, in the mid of 2000s, a number of banks lost billions of dollars on failing mortgage loans. The risk of such occurrence would be categorized as what? The risk of such operations is categorized as off balance sheet risk, is known as off balance sheet risk। Next, the risk of insolvency. The risk of insolvency is basically the risk of dash. Basically the risk of what? Asset value falling below the liability value. The asset value falling below the liability value. Next, credit risk is the risk related to the pervasive economic wide factors would be termed what? Would be termed, question number 54, would be termed systematic risk. Would be termed systematic risk. Would be termed as systematic risk, right? Next, deposit insurance shift most of the financial risk of bank failure from depositors to borrower की बैंक्स क्रेडिटर की बैंक स्टॉक होल्डर्स की फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? फेडरल गवर्नमेंट। The payoffs for financial derivatives are linked to what? The payoffs or financial derivatives are linked to प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी। डायरेक्ट मैंने आंसर बताया यहाँ पे, ठीक है। सिक्योरिटी दैट विल बी इशूड इन द फ्यूचर नहीं होगा, द वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं होने वाला। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर, नन ऑफ द अबव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंक्लूड स्टॉक्स, bonds, future, none of the above। तो financial derivative includes, we all know that is what? Future, right? Next, a letter of undertaking is an instrument which allow customer of a bank to raise what? To raise what? To raise short-term foreign currency. To raise short-term foreign currency. Next, one very basic example of an unsecured open-end loan commitment is known as what? Credit card. That is known as credit card. A bank assesses its operations and activities against a menu of potential operational risk vulnerabilities is called what? Is called self-risk assessment. Is called self-risk assessment. Next, a nomination can be made only in favor of any individual। हो सकता है पेरेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, स्पाउस चिल्ड्रन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एंड स्पाउस सिर्फ होगा ये भी जरूरी नहीं है, एनी इंडिविजुअल हो सकता है। Next, select the expanded form of essay as commonly used in life insurance। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sum assured, sum assured। Which of product offered by insurance companies that unlike a pure insurance policy give investor both insurance and investment under a single integrated plan? क्या बोलते हैं हम लोग 63 को? इसको हम बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्या बोलते हैं? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। Next, in which policy, if the policyholder survive till the end of this period, the risk cover lapses and no insurance benefit payment is made him to her? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 को, इसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म इंश्योरेंस प्लान। Next, in which policy the insurer agreed to pay the assured or his nominees a specified sum of money on his death of the or on the maturity of the policy whichever is earlier? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंडाउनमेंट प्लान, राइट। नेक्स्ट,
एज पर द इंश्योरेंस एक्ट एवरी इंश्योरर हैज टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हाट, क्या प्रिपेयर करना चाहिए उसको, उसको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी करना होगा, रेवेन्यू अकाउंट करना होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, दिस शुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, डैश आर एजेंट बट दे कैन सेल पॉलिसीज ऑफ सेवरल लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट अ टाइम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रोकर्स, वी ऑल नो दैट. डैश इज अ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट by the policy holders, that is known as surrender, that is known as surrender, right? Next, which of the following is a contract between two insurers or two insurers, original insurer and another insurer. 69 को हम लोग क्या बोलेंगे, reinsurance, इसको हम क्या बोलेंगे, reinsurance. Next, which of the following involves proportionate sharing of the insurance among more than one insurer. 70, क्या आंसर होगा, को इंश्योरेंस होगा. क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं को इंश्योरेंस. Next, when amount of for which subject matter is insured is more than its actual value, it is called as what, it is called as double insurance. When the amount for which subject matter is insured, it is more than, subject matter is insured is more than its actual value. A person whose risk is insured is called, a person insured whose risk is insured is called what, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्सन, राइट. मैंने आंसर सही पहले बता दिया. व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज, कब नेशनलाइज हुआ था, ये याद रखना होगा, 1956 में. रिस्क रिटेंशन मींस व्हाट, रिस्क रिटेंशन मींस accepting and agreeing to the finance the loss oneself. Pure risk was grouped, pure risk was grouped, क्या होगा, प्रॉपर्टी रिस्क होगा, पर्सनल रिस्क होगा, लायबिलिटी रिस्क होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा. So that is all of the above. The risk which arises because of change in major economic, social and cultural and political factors are particular risk, fundamental risk, speculative risk, dynamic risk. तो इसको बोलते हैं हम लोग fundamental risk. Insurance cover dash. Insurance cover protect risk, protect assets, prevent loss, reduce the impact of loss. Insurance immortality. तो क्या होगा इसका 77 का आंसर, reduce the impact of the loss, right? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा चूज करना होगा. स्टेटमेंट देखिए, ये बोल रहा है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर. स्टेटमेंट बी बोला जा रहा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर. क्या सही है, 77 या 78, सॉरी 77 बोल रहा है. स्टेटमेंट ए एंड बी के अंदर कौन सा सही है, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ए सही है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर, ये या सही होगा. दिस इज नॉट राइट स्टेटमेंट. Next, insurable interest mean statement A, legal right to insure. Statement B, have suffered financial loss. क्या होगा, स्टेटमेंट कौन सा सही होने वाला है, ए या बी या दोनों. मुझे तो लगता है दोनों ही सही होगा. लीगल राइट टू इंश्योर भी है और हैव सफर्ड फाइनेंशियल लॉस स्टेटमेंट बी भी हो सकता है, राइट. इसमें क्या बोला गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. One of the fundamental principle of the life insurance is what? One of the fundamental principle of life insurance is there is an insurer and the policyholder. ये भी सही है. Utmost good faith भी सही है. Both, sorry, insurable interest भी है और both B and C है. Sorry, there is an insurer and policyholder. ये सही नहीं है. Sorry for my wrong things. मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो ये सही नहीं है. तो यहाँ पे B मुझे लग रहा है सही है, C मुझे लग रहा है सही है. तो सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, B and C. नेक्स्ट, फैक्ट विच नीड टू बी डिस्क्लोज्ड. क्या डिस्क्लोज होना जरूरी है, फैक्ट ऑफ कॉमन नॉलेज, फैक्ट विच लेसन दी रिस्क, फैक्ट विच एवरीवन इज सपोज टू नो इन जनरल, फैमिली हिस्ट्री. तो कौन सा बताना जरूरी है, फैमिली हिस्ट्री बताना जरूरी है. नेक्स्ट, द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मेटेरियल फैक्ट अराइजेज इन लाइफ इंश्योरेंस. क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा कि only during the proposal stage, only during the policy period if there is a change in risk, only at the time of renewal, all of the above. तो इसका सही आंसर होगा all of the above. Dash increase the frequency of loss.
83 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस का इंक्रीज अगर होगा तो? पेरिल, सब्जेक्टिव रिस्क, हैजर्ड, ऑब्जेक्टिव रिस्क, तो हैजर्ड होगा, हैजर्ड। नेक्स्ट, डैश हैजर्ड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू डिसऑनेस्टी और कैरेक्टर डिफेक्ट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन। 84 क्या होगा? मोरल। नेक्स्ट, मास्टर पॉलिसी इज इशूड फॉर टर्म इंश्योरेंस स्कीम, परमानेंट इंश्योरेंस स्कीम, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एंड ग्रुप इंश्योरेंस। क्या होगा 85 का? ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सही आंसर क्या होगा? ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट, सब्रोगेशन मतलब क्या है? सब्रोगेशन मीन्स, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सब्रोगेशन मीन्स समथिंग ऑफ मॉनिटरी वैल्यू टू मेक गुड लॉस, पेमेंट ऑफ प्रीमियम नहीं, यहाँ पे होगा सब्रोगेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ एन इंश्योर्ड टू अनदर पर्सन, राइट? नेक्स्ट, dash risk happen within a stable environment and are constant over an observed period of time। 87 क्या होगा? 87 का आंसर क्या होगा? स्टैटिक, स्टैटिक होगा। Which among the following is not a pure risk? जो प्योर रिस्क नहीं है क्या होगा? पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, लॉस ऑफ इनकम रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। नेक्स्ट, which of the following method reduce the chance of loss to zero? 89 में क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? रिस्क अवॉइडेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क अवॉइडेंस। नेक्स्ट, डैश रेफर्स द मैनर इन व्हिच द रिस्क कंट्रोल मेजर्स दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड शैल बी फाइनेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा आंसर इसका? इसको हम बोलते हैं रिस्क फाइनेंसिंग, जो ऑलरेडी आंसर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ही। डैश इज द मोस्ट फेमस टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? सर्टेनिटी रिस्क, इंश्योरेंस, लॉस प्रिवेंशन, अनसर्टेनिटी रिस्क। क्या होगा इसका आंसर? इंश्योरेंस। Next, Dash is still the most leading channel in India for distributing insurance product। 92 का क्या होगा? ब्रोकर्स, एजेंसी पावर, इंश्योरेंस मार्केट, नेशनल मार्केट, तो एजेंसी पावर होगा, इसको बोलते हैं एजेंसी पावर। नेक्स्ट, एन इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट दी डैश इंश्योर्ड, इंश्योरर, गवर्नमेंट एडजस्टमेंट ब्यूरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर। Next, dash is a whole life policy that insurers to lives with the proceeds payable on the second, that is later death। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हम लोग बोलते हैं सर्वायरशिप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्वायरशिप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट, द डैश इज द फॉर्म विथ 4 सब्सिडियरी कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? ये हम लोग अगर मेरा रिवीजन वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी सब ये सब डिस्कशन किया गया है और नोट में भी है मेरे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? इसको क्या बोलेंगे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? इट हैज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, इट हैज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। Next, which of these is not an element of life insurance? That is policy holder। तो देख रहे हैं आप लोग, इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन जितना भी था 97 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप बस आप लोगों को इसको ध्यान से सुनना है, और एक बार आप लोग अगर मेरा रिवीजन वीडियोस देखेंगे और देखे भी है और उसके बाद अगर ये देख रहे हैं तो और भी आप लोगों को ईजी रहेगा समझने में भी, राइट? और एग्जाम के पहले तो ऑब्वियसली हेल्प होगा। तो माय पर्पस इज कि मैं एक बार आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, सो एंटायर पेपर 20 का एक ओवरऑल आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका भी एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, राइट? और डिस्कशन भी हो गया साथ साथ में हम लोगों का, तो दोनों तरफ से हम लोगों को फायदा हुआ, राइट? तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, कहीं पे भी अगर मुझे लगता है कि आपको लगता है कि नहीं ये इसका आंसर ये होना चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट एज वेल, क्योंकि हो सकता है मैंने कहाँ पे गलत बोल दिया होगा, गलती हो ही सकता है, इंसान से ही होता है। तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर गलती हुआ है तो अगर कोई पे भी कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत बोला है, आंसर गलत बोला है, तो जस्ट लेट मी नो ऑल्सो, राइट? सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज अपने दोस्त, अपने जूनियर्स, जो उन लोग भी सोच रहे हैं कि अभी भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो वो लोग उन लोग भी पता चलेगा कि हाँ
कौन सा पेपर लेना चाहिए, अगर आप लोग उस हिसाब से देख रहे हैं वीडियो, राइट। और जो लोग भी एग्जाम के पहले देख रहे हैं वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, एंड आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, राइट। और अगर मेरा रिवीजन वीडियो देख के भी बहुत फायदा हुआ है तो प्लीज 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 डू कमेंट इन माई वीडियोज एज वेल, सो मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे आने वाले टाइम में और क्या क्या आप लोगों के लिए फ्री सर्विसेज, फ्री रिसोर्सेज देना चाहिए, उसका भी मुझे एक आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अगर कोई एग्जाम के पहले देख रहा है वीडियो तो। और अगर कोई वैसे ही नॉर्मल पढ़ाई के लिए पढ़ रहा है, देख रहा है, या सोच रहा है कि मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, पेपर 20B या 20C, जो दोनों का वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल में, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मुझे लेना चाहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।